Now, I request our Joint Secretary to Governor, Sri Surya Prakash Garu, to address the gathering with his welcome note. Sir. Respected Honorable Governor, sir. Respected Secretary to Governor, sir. Distinguished guests and dear students, I extend my warm welcome to you all to the State Formation Day of Bihar, celebrated on 22nd March every year. Bihar is the birthplace of Buddhism and Jainism, and the state is also known as the abode of peace, as the concept of non-violence originated in the state Bihar. Bihar is a significant region in India's history and culture, with a rich heritage and unique traditions. Mundeshwari Temple in Bihar is one of the oldest temples in India. India's first president hailed from Bihar. Nalanda University, founded in 427 CE, is the world's first residential university. Chhat Puja, an iconic festival, is celebrated with great enthusiasm by the people across the state. Bihar is also famous for producing the second highest number of IAS officers in the country. The celebrations of Bihar State Formation Day is organized by Andhra Pradesh Raj Bhavan as part of Ek Bharat Shresth Bharat, to promote mutual understanding between different states and union territories through the concept of oneness, one national, one people. With these few words, I conclude my welcome note. Thank you all. Thank you, sir. Now, I request all the dignitaries to have a video message by Sri Arif Muhammad Khan Garu, Honorable Governor of Bihar State. प्रणाम। आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव बोध का दिन है और इसे हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों में रहने वाले बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके राजभवन में आज बिहार दिवस के आयोजन के लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित होने वाला ये अनूठा कार्यक्रम भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को समझने, समस्त भारतवासियों के बीच बंधुत्व और एकात्मता के भाव को बढ़ाने तथा देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। वैदिक युग से लेकर अब तक आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार की रत्न गर्भा धरती ने राज ऋषि जनक जैसे राजा, अशोक जैसे सम्राट, समुद्रगुप्त सरीखे अपराजय विजेता, चंद्रगुप्त जैसे शासक, वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा, चाणक्य जैसे नीतिज्ञ, याज्ञवल्क्य, गौतम, कपिल, कनाद एवं विश्वामित्र जैसे ब्रह्मज्ञ ऋषि, मंडन मिश्रा जैसे दार्शनिक, विद्यापति और दिनकर जैसे कवि तथा दशरथ मांझी जैसे पर्वत पुरुष को जन्म दिया है। जगत जननी सीता और सिख परंपरा के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि होने का गौरव भी बिहार को प्राप्त है। विश्व की दो महान आध्यात्मिक परंपराएं बौद्ध और जैन धर्म को जन्म देने का श्रेय भी बिहार की भूमि को ही है। मध्यकाल में बिहार की धरती सूफी संतों की वाणी से भी अनुप्राणित हुई है। बिहार का वैशाली विश्व में लोकतंत्र की जननी माना जाता है।
शिक्षा से संबंधित विश्व के दो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला ये भी बिहार में ही बनाए गए थे। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के पहले सफल अभिनव प्रयोग का सौभाग्य भी बिहार के चंपारण को ही मिला। भारत की आजादी की लड़ाई में बिहार के लोगों ने अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया। बिहार में राजगीर, बोधगया, नालंदा, पटना साहिब और वैशाली जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं जहां देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। हमारे राज्य बिहार के लोग सुहृदय और मिलनसार हैं तथा अतिथियों का सेवा सत्कार प्रेम पूर्वक करते हैं। मैं अपने राज्यवासियों की ओर से आपको बिहार आने के लिए आमंत्रित करता हूं। बिहार दिवस के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मेरी शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय राज्यपाल एवं उनके सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, जय भारत। That was video message by the Honorable Governor of the Bihar State, Sri Arif Muhammad Khan sir. Thank you, sir. Bihar State of Eastern India. Now I request to play a short video on the Bihar State. Bihar is a unique state which carries a rich historical lineage. The history of Bihar dates back to the very dawn of human civilization. Mythological tales cites Sita as a princess daughter of King Janak of Videha. Ramayana circuit is traced on these footmarks. Bihar sprouted the first seeds of democracy in the world. Bihar has seen the birth of the prominent religions Buddhism and Jainism. Prince Gautam attained enlightenment, became Buddha at Bodh Gaya. The hill of Giddhakut in Rajgir is perhaps the most important place related to the life of Buddha. Jainism traces its spiritual ideas and history through the succession of 24 Tirthankaras. Vardhaman Mahavira was born in Vaishali. Mahavir achieved nirvana in Pavapuri, which is a pilgrim site for Jains from across the world. Bodh Gaya, Vaishali, Lechwar, related to the both Buddhism and Jainism, sees large number of tourist footfall. Nanda dynasty, who ruled most of the northern part of the Indian subcontinent. Ancient sources credit them with amassing great wealth, which was probably a result of introduction of new currency and taxation system. Down the lanes of history, Chandragupta Maurya in ancient India expanded a kingdom based in Magad. Kumrar in Patna stands testimony to the great Mauryan Empire. Ashoka, the grandson of Chandragupta, built numerous stupas and pillars in his empire. The national symbol, the four-headed lion, which adorns Indian currency, was erected atop the Ashokan pillar. The Gupta Empire is considered as a golden age of India by historians. Many Hindu epics and literary sources such as Mahabharata and Ramayana was canonized during this period. Vishnupad, the temple in Gaya, is visited by Hindus from across the globe for salvation of ancestors. Harmandir Sahib in Patna city is an important pilgrimage for Sikhs from around the globe. History has definitely been the foundation of major tourism activity in Bihar. Buddhist circuit
is a trail which traces Buddha in Bihar. The Ramayana circuit sheds an interesting reflection on the ancient history and epic Ramayana and its connection with Bihar. Connection of Mahatma Gandhi with Bihar, popular as Gandhi Circuit. The development of the state is further reflected in its roads, bridges and better connectivity. Golghar on the banks of river Ganga is an attraction which catches a lot of attention. Introduction to Bihar would not be complete without the mention of its delectable cuisine. Chhath, Holi, Dashehra are also important occasions that bind the diaspora to congregate. In Bihar, one finds interesting painting styles like Madhubani, Manjusha, Sikki and Tikuli art forms worldwide favorite. Bihar also has a well-preserved ecology, promoting eco-tourism. Kakolit Waterfalls, Bhimban in Munger, Ghora Katora in Rajgir, Valmiki Nagar Tiger Reserve, Gangetic Dolphin Sanctuary in Kehelgaon. To promote the tourism spirit and local sensibilities, Bihar Tourism Department takes active part in promoting about 36 fairs and festivals in the state. Bihar is a fascinating mix of tradition coupled with fast-paced development and ideal concoction for tourists. That was wonderful video on the Bihar state. Thank you for watching. Now I cordially invite Mr. Ravi Vox from School of Planning, Vijayawada, to deliver his speech. Honorable Governor of Andhra Pradesh, esteemed dignitaries, respected guests and dear friends, a very good morning. We offer our heartfelt respects to Honorable Governor of Andhra Pradesh for inviting us to this great event and giving us the opportunity to celebrate the glorious legacy of Bihar Foundation Day. Today, as we stand together to honor the land that has shaped the very soul of our great nation, my heart swells with pride. Bihar is not just a state, it is a civilization, a philosophy, a legacy of wisdom and valor. It is the land that nurtures the dreams of emperors, the wisdom of scholars, and the courage of revolutionaries. More than 2000 years ago, Bihar was the epicenter of mighty Maurya Empire, an empire that defined governance, diplomacy, and valor. Samrat Chandragupta Maurya, with the guidance of Acharya Chanakya, built an empire that stretched from Himalayas to the southern east. The world still remembers the wisdom of Arthashastra, written by Chanakya, which laid the foundation of political science and economy as we know today. But Bihar's history is not just about kings and empires. It is about struggles and sacrifices, about the dreams that shaped the destiny. Ashoka the Great, after witnessing the horrors of the war, transformed into a messenger of peace, spreading the values of Buddhism across the world. His journey from a conqueror to a compassionate leader teaches us that the true greatness lies not in power, but the service of humanity. Na chaur haryam, na cha rajaharyam, na bhrati bhagyam, na cha bharkari. Vyaya krite vardhita evam nityam, vidyadhanam sarvadhan pradhanam. That means, knowledge is the greatest wealth, one that cannot be stolen, taxed or divided. The more we share it, the more it grows. When we talk about the rise of modern India as we know, how can we forget Bihar's contribution? It was on this sacred land that Lord Buddha attained enlightenment in Bodh Gaya. And Guru Gobind Singh Ji was born in Patna Sahib, inspiring millions. It was Bihar that ignited the flame of India's first freedom movement in 1857, with Veer Kunwar Singh fighting bravely against the British. It was Jai Prakash Narayan who led the call for total revolution, giving the voice to common people and defining democracy. And of course, Dr. Rajendra Prasad, a son of Bihar, became the first president of independent India, guiding our nation with wisdom and humility. Even today, Bihar continues to be a beacon of excellence,
from IS officers to mathematicians like Vasishtha Narayan Singh to sports champions, Bihar continues to shape India's future. Bihar's story is far from over. The same land that once led the world in knowledge and governance still holds the potential to inspire future generations. With its rich history and resilient people, Bihar stands as a testament to spirit of perseverance and progress. As we celebrate Bihar Foundation Day, let us take a moment to remember that Bihar is not just a part of India's past, it is an integral part of its future. It is the land where ideas take shape, where courage finds a voice, and where dreams come into reality. Let us cherish this legacy and move forward with the same indomitable spirit that has defined Bihar for centuries. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you. Now I request Mr. Sudhanshu Rajan and Ms. Ispita Jha to recite a poem. Good morning to one and all present here. Today I, Ipshita Jha, and my friend Sudhanshu Ranjan are here to present a poem adapted from Rashmi Rathi, an epic poem by the renowned poet Ramdhari Singh Dinkar. Rashmi Rathi narrates the legendary tale of Karna, one of the most complex and heroic figures in the Mahabharata. Dinkar, often referred to as a national poet of India, was born in Begusarai, Bihar. A progressive and humanist poet, he used his verses to champion justice, courage, and equality. Alongside his literary contributions, he was a fierce freedom fighter, a profound writer, and an insightful essayist, whose words continue to inspire generations. The poem goes like, सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं. है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है. This poem highlights human resilience and determination in the face of adversity. It emphasizes that only the weak fear challenges, while the brave embrace obstacles and turn difficulties into opportunities. Hard work and perseverance can achieve the impossible, just as efforts turn stone to water. Dinkar's message remains timeless. Obstacles may rise, but unwavering efforts always lead to victory. Thank you to all for listening to us. Thank you, sir. Thank you, friends. Now I request Mr. Vikash Kumar from Vignan University to sing a song. I wish you all a happy and joyful good morning to all of you. Honorable Governor Sir and Deputy Secretary Sir and all the officers of this Raj Bhavan. I am Vikash Kumar Sir from one of the district of Bihar where one painting is famous, which you already know, Madhubani painting. First of all, I thanks to all the officers and the management of Vignan University, Jeevan sir, and second, the Raj Bhavan officers who give me this golden opportunity to speak and sing something on the Bihar Divas. Now I start my singing. कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे
नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इनको क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। I request to all of you, any mistakes are done during the singing, please forgive me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Bihar. That was a melodious song. Thank you, Mr. Vikash. Now I cordially invite Ms. Soumya Sharma to deliver her speech. Good morning to one and all present here. First of all, I, on behalf of KL University, would like to extend my heartfelt thanks to the Honorable Governor Sir, Shri S. Abdul Nazir Sir, and the Governor Office for inviting us here and giving me the opportunity to speak about my state. Thank you, sir. Respected dignitaries and my dear friends, I, Soumya Sharma, come from the land of monasteries, the birthplace of enlightenment, the cradle of vibrant culture and enriching history, Bihar. Today, as we gather to celebrate Bihar Divas, we honor the formation of this incredible state, a land that has shaped history, culture, and spirituality for centuries. Bihar has always played a pivotal role in shaping the historical and cultural landscape of India, from establishing the world's first republic, Vaishali, to founding the world's first residential university, Nalanda. The contributions of Bihar to India's heritage are truly unforgettable. Bihar has left its footprints in India's history of governance, education, politics, and spiritual wisdom. It is indeed a land of spiritual awakening, where Gautam Buddha attained enlightenment, Lord Mahavira preached Jainism, and Guru Gobind Singh, the 10th Sikh Guru, was born, where sacred sites like Maner Sharif and Patan Devi Temple reflect its rich religious diversity. Bihar witnessed India's first empire, the Mauryan Empire, with Chanakya laying the foundation of governance and Ashoka spreading Buddhism worldwide. Alongside, Bihar's contribution to education is second to none. Nalanda University, a hub for subjects like philosophy, mathematics, medicine, astronomy, and literature, reminds us of Bihar's glorious past as a beacon of knowledge and learning. Bihar also gifted India some of its greatest minds, like Aryabhatta, the pioneer of zero, and Dr. Rajendra Prasad, the nation's first president. From Babu Kunwar Singh Vellore in 1857 to the Jai Prakash movement that shaped democracy, Bihar's contributions continue to inspire generations. It is also a land of ancient heritage and vibrant traditions. It is an interesting blend of languages, festivals, and art. Home to languages like Hindi, Maithili, Bhojpuri, and Maghi, its literary legacy shines through poets like Vidyapati and Ramdhari Singh Dinkar. Festivals like Chhat Puja,
Sujani embroidery, and Buddh Purnima showcased its deep-rooted spirituality, while Madhubani paintings, Sujani embroidery, and Bhagalpuri silk highlight its artistic brilliance. The soulful melodies of Bhojpuri and Maithili folk songs, along with dances like Jijya and Jajjatin, bring its culture to life. However, Bihar is nothing without its people, who are known for their resilience, determination, and hard-working spirit, making their mark across India and worldwide. From farmers to entrepreneurs, from laborers to intellectuals, their contributions in every field with their dedication and perseverance continues without saying. Their strong work ethic continues to fuel various industries, strengthens economies, making a remarkable contribution to nation building. Whether migrating for better opportunities or excelling in their homeland, they carry their cultural values and indomitable spirit wherever they go. Their ability to adapt, learn, and thrive in any environment is a testament to their grit, making them an integral part of progress and development worldwide. Today, as we celebrate Bihar Divas, let's honor the glorious past of Bihar and pledge towards working for even brighter future. In the words of the great poet, Maithili poet Vidyapati, Janani Janbhumischa Sargadapi Garyasi, Mother and motherland are greater than heaven. Jai Bihar, Jai Andhra, Jai Hind. Thank you, Ms. Soumya. Now I request Mr. Preet Kumar from School of Planning, Vijayawada, to recite a poem. माननीय राज्यपाल महोदय आंध्र प्रदेश एवं उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, सादर नमस्कार। मैं प्रीत कुमार योजना तथा वास्तुकला विद्यालय का छात्र हूँ। आज मैं आप सबों के समक्ष पद्मश्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक कविता तुम कनक किरण के अंतराल में का पाठ करने जा रहा हूँ। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के धन रस कन झरते। नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के धन रस कन झरते। है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में अधरों के मधुर कगारों में कल कल ध्वनि की गुंजारों में। अधरों के मधुर कगारों में कल कल ध्वनि की गुंजारों में। मधुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में बेला वे भ्रम की बीत चली रजनी गंधा की कली खिली। बेला वे भ्रम की बीत चली रजनी गंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय आकुलित दुकुल कलित हो यूं खिलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you, Mr. Preet Kumar.
Now I warmly welcome to Miss Anshu Abhilasha from VT University to sing a melodious song. Happy Bihar Day to Honorable Governor Sir and other senior dignitaries and my friends. Today I, Anshu Abhilasha, going to sing a song on Bihar. ये बिहार है, इसकी माटी चंदन से पावन है। ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है। ये बिहार है, इसकी माटी चंदन से पावन है। ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है। मेरा बिहार, मेरा बिहार, मेरा बिहार। लोकतंत्र के पहली धारा फूटी जिस धरती पर, जैन बौद्ध सिख धर्म फले फूले हैं इस धरती पर। वाल्मीकि की रामायण या महावीर की वाणी, मिथिला में है जनक सुता की मुखरित एक कहानी, मुखरित एक कहानी। विद्या ज्योति जलाता यह नालंदा का प्रांगण है। ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है, गंगा का आंगन है। मेरा बिहार, मेरा बिहार, मेरा बिहार। धन्यवाद। To Abhilasha. Now I request Mr. Atul Kumar Jha from SRM University to recite a poetry and also deliver his speech. बात बेबात अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा बिहार रहता है। वेरी गुड मॉर्निंग to each all of you. Revered Governor Sir, all the dignitaries, all the representative staffs and all the management staffs. आज बिहार दिवस के इस अवसर पर मेरे अंदर का बिहार आपसे कुछ कहना चाहता है, गौर से सुनिएगा। मैं कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान के स्तंभ पर टिका एक दृढ़ राज्य हूँ। मैं ज्ञान गुणसागर के विशाल लहरों से सराबोर एक ऐतिहासिक साम्राज्य हूँ। मैं विद्वता का पर्याय तो वीरता का अभिप्राय हूँ। किस्मत के छल से नहीं, मेहनत के बल पर बना मैं विश्व का सबसे पहला गणराज्य हूँ। मैं बिहार हूँ, मैं बिहार हूँ। मैं वह राज्य हूँ जिसने दुनिया को ग्रंथ महान रामायण का रचयिता दिया है। मैंने दुनिया को शल्य चिकित्सा सर्जरी का पाठ पढ़ाया है। वसंत से पूर्व जिस तरह सभी पेड़ पौधों की पूरी तरह छटाई कर दी जाती है, उसके सारे पुराने पत्तों को निकाल फेंक टहनियों को बेजान कर देते हैं, उसी तरह अनेकों बार अनेकों अतिक्रमणकारियों ने मुझे रौंद डाला। पर मैं हर बार उस नए नवजात चमकदार पत्ते के समान प्रकट हुआ जो वापस उन बेजान टहनियों में जान फूंक देती है। फलस्वरूप मैं और भी घना, और भी झंकृत, और भी छायावान, और भी विशाल वृक्ष का रूप लेता चला गया। शायद इसीलिए उन विदेशियों ने भी मेरा लोहा माना और तबकाते नसीरी में मुझे बहार कहकर संबोधित किया। मैंने सदा ही सच्ची प्रतिभा को पहचाना है, तभी तो गौतम को बुद्ध और महावीर को जैन बनाया है। मैंने शांति को अपनाया है, पर हाँ पराक्रम भी भरपूर दिखाया है। एक ऐसे ही पराक्रमी की परिभाषा दूं, अग्नि को भी जलाकर राख कर दे उसका ऐसा शौर्य था। अखंड भारत का निर्माता वह चंद्रगुप्त मौर्य था। जी हाँ, मैं साक्षी हूँ उस चाणक्य का जिसने एक मामूली से शख्स को चंद्रगुप्त महान कर दिया था। मैं बिहार हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं बिहार हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। जब दुनिया विस्तारवाद को सींच रही थी, मैं ज्ञान भंडार नालंदा विश्वविद्यालय बना रहा था, पर न जाने किसी की नज़र लग गई और एक अतिक्रमणकारी ने हमारे गौरव पर आघात करते हुए पूरी की पूरी पुस्तकालय जला डाली। वह 9 मंजिला पुस्तकालय 9 माह तक काले धुएं और प्रज्वलित लपटों के पीछे से कराहता रहा और अंततः उसकी राख इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई।
पर ऐसा नहीं कि हमने कभी अपना शौर्य दिखाया ना हो। मेरे ही इस धरती पर वह अशोक हुआ जिसे दुनिया ने अशोक महान कहा। मेरे ही इस धरती पर शेर शाह सा बलवान हुआ। वह शेर शाह ही थे जिन्होंने एक मामूली से परिवार से आते हुए भी पूरा का पूरा साम्राज्य जीत लिया और रुपया, डाकघर, जीटी रोड, पुलिस बल का गठन करके हमें सदियों के लिए गौरवान्वित कर गया। कवि शंभू शेखर कहते हैं, बनकर अशोक सब जीत लिया फिर भी हम शांति पुजारी हैं। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कुछ समय बदला था, कुछ परिस्थितियां बदली। अब अंग्रेज़ों के कदम उठ चले थे मेरी अस्मिता को मिटाने को, पर मेरे वीर सपूतों ने उन विध्वंसकारी कदमों को काट फेंकने की कसम जो खा रखी थी, और तब मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई एक ऐसी आंधी जिसने न ही केवल उन अंग्रेज़ों को विचलित कर दिया बल्कि मेरे अन्य देशवासियों को भी देश प्रेम के प्रति जागृत कर दिया। वह वीर थे बाबू वीर कुंवर सिंह। वह बाबू वीर कुंवर सिंह ही थे जिनके लिए उन अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि अगर 1897 में वह 80 साल के ना होते तो भारत को आज़ादी 1897 में ही मिल गई होती। 80 की आयु थी जिसकी, पर लहू राजपुताना था। थे कुंवर सिंह जिनको सबने फिर भीष्म पितामह माना था। मैं खुदीराम बोस की जन्मभूमि हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि हूँ। मैंने आज़ादी के संघर्षों को ज़मीन प्रदान की है। मैंने गांधी के सत्याग्रह को पहली आवाज़ दी है। अंततः मुझे आज़ादी मिली, हमारे देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के पश्चात नए जोशो उमंग से मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पूर्ति हेतु मुझे विभाजन का मुख दोबारा देखना पड़ा। मैंने अपने सारे खनिज खो दिए, मैंने सारे औद्योगिक क्षेत्र खो दिए, पर मैंने नहीं खोए तो वो थे मेरे लोग। और इसका फल यह मिला कि चरक, सुश्रुत, पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, वीर कुंवर सिंह, जेपी नारायण, अनुग्रह नारायण, राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्र निर्माताओं की कड़ी में आपने अपना भी नाम जोड़ते हुए मेरे उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न किए। पर पिछले कुछ दशकों में मेरी पहचान ज़रा धूमिल सी हो गई है। मैं आज अपनी और अपने आज की पहचान बताने आया हूँ। मैं महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण का बिहार हूँ। मैं बिस्मिल्लाह खां का बिहार हूँ। मैं दिनकर बेनीपुरी रेणु का बिहार हूँ। मैं शारदा सिन्हा का बिहार हूँ। मैं सीपी ठाकुर का बिहार हूँ। मैं सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी का बिहार हूँ। मैं रवीश कुमार, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप का बिहार हूँ। और सच ही हैं, गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष हैं हजार, ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। अंततः एक बिहारी होने के नाते पूरे गर्व से अपने शब्दों को विराम देते हुए कहता हूँ, और कवि शंभू शेखर की एक और कविता कहता हूँ कि हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। जय हिंद, जय बिहार, जय आंध्र। Thank you, Mr. Atul Kumar Jha. Now I request Mr. Kartik Walia from Bihar State to perform the classical instrument flute. आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। सीता माता की जन्मभूमि को नमन करते हुए मैं आप सभी के समक्ष राम स्तुति प्रस्तुत करना चाहूँगा।
That was awesome performance. Thank you, Mr. Karthik Walia. Now I warmly welcome Miss Jagrati Kumari and Miss Astuti Kumari from Vignan University to perform a group dance. That was a beautiful performance by Miss Jagrati Kumari and Miss Astuti Kumari. Thank you, friends. Now, I cordially invite our Honorable Governor Sri Abdul Najeer sir to grace the occasion and address the gathering. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and my dear students, my warm greetings to you all. You are right, Mr. Atul Kumar Jha. Where is he? बिहार ने सब कुछ देखा है. But you missed one name, I suppose. You took the name right from Ashoka till Manoj Vajpayee and the famous anchor. उसके बाद Anjana Om Kashyap. But you have missed one name, I thought. Who said Khamosh with distinction? Yeah. Why did you miss that? That is why I quoted Ginati. Is it for political reason? The man who entertained for 5 decades and continues to. Next time I will include him also. Okay. At the outset, I extend my warm greetings and hearty felicitations to the people of Bihar on the occasion of Bihar Day, celebrated on 22nd March every year, commemorating the state's formation after its separation from the Bengal province in 1912. Most of my speech may be a repetition because right from the Honorable Governor of Bihar till Mr. Jha, all of you have said about Bihar. It may look like repetition, but I can't help. Bihar had a glorious past, and the state is a place full of history and spiritual significance. Located in the eastern part of Bihar, Bihar is known as the land of monasteries, and it is a home to many historic landmarks that make the state worth visiting. Two of India's most
glorious dynasties, Mauryas and Guptas, flourished in the ancient Bihar region, which was then known as Magad. The great king Ashoka of Mauryan dynasty, whose empire spread across South Asia, hailed from Bihar. He had his capital in Pataliputra, that is present-day Patna. The Gupta period is termed as India's golden age. Nalanda and Vikramshila were the centers of learning established in the 5th and 8th century respectively in Bihar and are regarded amongst the oldest international universities where the students from across the world came to study. The great spiritual way of Buddhism originated and thrived in ancient Bihar as Buddha attained his enlightenment in Bodh Gaya. The region is full of remains of Buddhist monasteries and stupas. Lord Mahavira, the 24th Tirthankara of Jain religion, also belonged to this region and attained his nirvana at Pavapuri, Magad, present-day Nalanda, right? Among the Hindu religious places, Bihar has one of the most prominent pilgrimages at Gaya, where people come to offer veneration to their ancestors. Ramayana and Mahabharata. The grand epics of India have numerous tales associated with various places in Bihar. The author of Ramayana, Valmiki, also belonged to this region. Really, you should be very proud of. Bihar had also been a hub of the development of Sufism, as quite a few Sufi saints were settled here. Notable Islamic saints among them are Imam Taj Faqih of Maner, Shahabuddin of Jetuli, Mr. Fazlullah Gosain of Daira, Ahmad Isa Taj of Baisar, Sayyid Sadruddin Zahidi, etc. The Khadri order, which is one of the chief Sufi orders in the state, had one of its prominent representatives, Sayyid Muhammad of Amjhar Sharif, based in the Aurangabad district of Bihar. The 10th Sikh Guru, Sri Guru Govind Singh Ji Maharaj, was born in Patna. Takht Shri Harimandir Ji Sahib, built by Maharaja Ranjit Singh to commemorate his birthplace, is regarded as one of the 5 Akal Takhts of the Sikhs. Bihar state offers a vast choice of religious pilgrimage to take trips like the Buddhist circuit, Jain circuit, Ramayan circuit, Sufi circuit, Hindu circuit, Sikh circuit, etc. for pilgrimage purpose or just to enjoy the sheer beauty of the archaeological remains and the amazing natural surroundings of the state. The Grand Trunk Road connecting India to Central Asia was built in the state during the 16th century ruler Sher Shah Suri, and Mahatma Gandhi started his Satyagraha movement from Champaran region of Bihar in protest against the oppression of the indigo farmers by British rulers. The famous Bihari dishes like Thekua, nobody mentioned this, unfortunately. Dal Pitha, Litti Choka, whether my pronunciation is all right? Bihari Kebab for non-vegetarians. Sattu Paratha, Dal Puri, Bihari Gugni are some of the delicacies one cannot miss during a visit to the state. India's rich cultural heritage in the history and the development of the country
is based on the principles of nonviolence, justice, diversity of languages, culture, region, tied in a thread of unity. The Ek Bharat Shrestha Bharat program enables us to share the knowledge of the culture, traditions and practices of different states and union territories, leading to an enhanced understanding and bonding between the states, thereby strengthening the unity and integrity of India through the concept of oneness. Great leaders like Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Gopal Krishna Gokhale, Sardar Vallabhbhai Patel have strongly advocated the idea of unity, brotherhood, tolerance and non-violence. We strongly believe in the spirit of fraternity, universal brotherhood and the concept of one nation, one people. I once again extend my heartiest greetings and felicitations to the people of Bihar on their State Foundation Day. Thank you all. Jai Hind.